So good evening Yeah. all. So Um, uh, हाँ वरुण जी 2019 कर लिया. yeah 2019 में एक मूवी आई थी इन्सिडेंटल प्राइम मिनिस्टर and today I am the incidental moderator of this session. Mr. Rahul is not available, so I am the moderator of yours. So आज विकास अग्रवाल जी हमारे साथ हैं और विकास अग्रवाल जी का more than 20 years का एक्सपीरियंस है AIS एंड PFS में इनकी एक्सपर्टीज है और मेरे बार बार फोन बज रहे हैं. ओके सो विकास जी आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको सीधे इनवाइट करता हूँ, आप आएं और हम लोगों को AIS और PMS के बारे में ज्यादा जानकारी दें. ओके ओके. सो थैंक यू वरुण जी. सबसे पहले मैं आपका और निशान जी का शुक्रिया अदा करता हूँ. लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक बोथ ऑफ यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ वंडरफुल सेशन and also want to thank man himself, Mr. Kannan, who is behind the course and has been instrumental in terms of helping lot many individual financial advisors to grow in their life in terms of knowledge. So excellent work you guys are doing, and I had a chance to attend the recent event also in Mumbai at Mumbai Sahar Hotel Marriott. It was wonderful event, I would say. So great. So how do you want me to start? If you could just tell me कि मतलब मैं आपसे डायरेक्ट AIF-PMS का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं या कोई प्रेजेंटेशन रन करूं. हाउ डू यू वांट मी टू डू इट? सर स्टार्ट करिए एक्सपीरियंस से और अगर आप जरूरी समझें तो प्रेजेंटेशन रन कर लीजिएगा. ओके ओके ग्रेट. सो देखिए, जैसा आपने बोला कि मेरा करीब करीब 20 साल का तजुर्बा है ओवरऑल इंडस्ट्री में. तो मुझे याद है कि जब मैंने MBA करी थी पुणे से, देयर इज अ कॉलेज बाय द नेम ISBM. I studied from there and started my career. So I started with a broking firm that's called Sher Khan. That was my first job. And then I went on to join asset management companies and had an opportunity to work with a couple of AMCs in my life in the initial stage of my career. And the maximum time that I spent was an organization called Motilal Oswal. I'm sure all of you know Motilal Oswal very well. So I had a chance to work closely with the asset management team, the senior management out there, and also with some of the good quality portfolio managers. Then 2020, during the lockdown, 27th March, I still remember when our Honorable Prime Minister declared COVID emergency in 2020. That was a time when I thought, I think it's a time that I should quit, because it's a good opportunity for me to sort of think through what I want to do and then start. So it was this idea of building a platform which is alternate investment and portfolio management services. This was going on in my mind for quite some time, and I spent almost, as I said, 2 decades in the industry, out of which I scaled the PMS business for more than 10 years in Motilal Oswal and close to 4 to 5 years in HSBC. So I thought, because I'm sort of expert in this area, why not I would utilize my strength, analyze it in the right direction. And that was a time when we started. So I remember 3rd of April, we got the company registered in 2020 during the lockdown itself. And when started up this company on 1st of May. That was the first lockdown time. So we started from home only. As we speak, we've just completed 3 years now, and we are now 14 of us in the organization, and we are trying to scale it up. And in last 3 years, we have raised about close to 400 crores of AIF and PMS. And while raising this fund, one thing I've realized is that I would not like to claim the credit alone, because this space is is built in a way that it has a lot of opportunities, because the minimum ticket size starts with 50 lakhs. So you can really think about scaling up this business big time. So we built the platform. So there are 4 P's that I focused on. The first P was to build a platform called AIFPMS.com. So our company is www.aifpms.com. So it took me almost a year to build the platform.
we onboarded more than close to 120 high quality portfolio managers on the platform. You know, there are many boutique managers. There are, so basically क्या होता था पहले, this distribution business, especially AIF and PM, it used to be in the hand of very large players. जूलियस बेयर हो गया, या अपना IFL हो गया, इन जितने भी लार्ज कोटक वेल्थ हो गए, हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी बिल्ड द प्लेटफॉर्म इन अ मैनर वेयर we also participate, and we will allow all our clients to also participate, because if there is a deserving portfolio manager, is doing good, why it is available only on the shelf of large wealth managers? Why not with us also, so that we can reach out to our clients and create wealth? So we built a platform in a manner where all the high quality portfolio managers were onboarded. I'm grateful to them that they consider us and they gave us an opportunity to come on our platform, and we partnered with them, all of them, and we started reaching out to our clients. And that was a time, first time, when we felt that we our product bouquet is very strong, because a lot of things are happening in AIF and PMS, and I'll share the presentation with you shortly, where I'll tell you the kind of opportunities which are available in this space. And I personally believe, Varunji, is that all of you, all the IFA friends, brothers and sisters, they should also be start looking at this asset class seriously. Mutual fund to sahi hai. I'm not denying on that. All of us have worked with, I worked with asset management companies on the mutual fund side. I personally have couple of SIPs going on. तो म्यूचुअल फंड तो सही है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि AIF और PMS गलत है. म्यूचुअल फंड तो सही है, लेकिन AIF और PMS भी सही है, और कुछ AIF PMS बेहतरीन भी है, और मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे यूनिकनेस होती है. दूसरी चीज ये बोलना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड्स में तो आपका पूरा पोर्टफोलियो बन सकता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, बट हम सब अपने आप को म्यूचुअल फंड के लेवल पे क्यों रखें? आप अपने आप को एज अ फिनेंशियल एडवाइजर रखिए, और उसमें अगर किसी इन्वेस्टर को ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स की जरूरत है पोर्टफोलियो में, तो उसे आप डिस्करेज क्यों करें, एनकरेज करें. आप डिस्करेज करेंगे तो वो किसी और से ले लेगा. इन्वेस्टर तो आज की डेट में आपको पता है बहुत अवेयर है, एंड हम लोगों ने काफी समय बिताया इसमें भी. मतलब मैं काफी प्राउड से बोलता हूँ कि देयर इज नो बेस्ट ब्रेन टू हुम आई हैव नॉट इंटरव्यूड इन इंडिया, राइट फ्रॉम रामदेव अग्रवाल टू सुनील सिंघानिया जी, सौरभ मुखर्जी जी, और जितने भी आशीष तोमैया जी, जितने भी नीलेश शाह, जितने भी हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, इनको मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू किया है, और उनकी जो लर्निंग है वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ में शेयर करी है. तो कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है. आजकल डिजिटल का जमाना है ना वरुण जी? तो सिचुएशंस पहले जैसी नहीं रही है. तो मेरा ये सबमिशन है विद द फोल्डेड हैंड टू ऑल आवर IFA फ्रेंड्स दैट they should also start considering this, because this industry is just began the growth journey. So ये वहां पे है जहां पे म्यूचुअल फंड 20 साल पहले होता. आज म्यूचुअल फंड का हम सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है. बट आपको मैं अभी कुछ नंबर्स बताने वाला हूँ प्रेजेंटेशन में, आप शॉक्ड हो जाएंगे कि जिस तेजी से AIF और PMS इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 50 लाख करोड़ का एसेट AIF PMS इंडस्ट्री में भी पैरेलली तैयार हो जाएगा. पर उस समय ये ना हो कि हमारी बस छूट जाए. माई पॉइंट, लिमिटेड पॉइंट इज दैट अगर आपके पास में कोई HNI इन्वेस्टर्स हैं, और आपके पास में कोई लार्ज फैमिली ऑफिसेस हैं, तो आप भी क्यों ना ये सर्विसेज को अवेल कराएं. तो विद दैट आई run a small presentation, and I'll just take hardly 5-10 minutes to run this presentation, and I'd like to open the forum for Q&A, because जब तक वो Q&A नहीं होगा तब तक कि उसका जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा प्रेजेंटेशन का. तो कैन आई शेयर द प्रेजेंटेशन? Sure, sir, please. या श्योर. So yeah, so can you see my screen?
No, sir, the screen is not visible now. Okay. Can you see now? Yeah. Okay. All right. So we'll start the presentation. I have very few slides to show it to all of you. So what is AIF? Let's understand that basically. So basically, आप देखते हैं कि till about 2011 इसमें क्या होता था वरुण जी की people used to call it private equity fund, venture capitalist fund, and alternate fund, etc. etc. So इन्होंने क्या बोला सेबी ने कि nothing doing, let's have a common platform, let me regulate the whole industry, because some people say ये वेंचर फंड है, ये फंड है, प्राइवेट इक्विटी है, इसमें ये होता है, फंडिंग होती है. So SEBI was thinking that how do we track this as a regulator? You know what is happening, and so in the interest of the investor, they decided that 2010 they decided 2011 they came out with the AIF regulation. They told everybody that all of you please come on the same platform. Let's have a three category: category 1, category 2, and category 3. And I'll tell you each of these category quickly. That all of you come in the form of AIF, which is a privately pooled investment vehicle, like your mutual fund vehicle, that collects funds from the investor and invest on your behalf in various securities, which could be listed and unlisted. We'll come to that. So from there, you see the whole industry when it got regulated, because regulator is like a father of the industry. This industry started shaping up big time. And you will not believe that total asset under management of AIF in the industry has reached to close to 7.5 lakh crores today. आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब वरुण जी इतनी जल्दी, आप सोचिए कि 2012 को ये रेगुलेट हुआ. 2013 people started coming out with funds, and there were very few managers those days. As we speak today, the total asset under management of AIF stands at 7.5 lakh crores. So basically what it does, it's basically an unconventional way of creating wealth. So it invests in assets other than traditional investments, such as stocks, bonds, and cash market instruments. So there are, as I said, there are three different categories. What are these categories? So category 1, which essentially invest in SME startups. You might have seen a couple of, like the speaker who came before me last week, he talked about AIF, category 1. So there are few boutique portfolio managers who are really good at identifying those startups at an early stage of their growth curve. They pick them up early, and they basically invest in those businesses. So that's called category 1. Then category 2. So what does not come under 1 and 3 is category 2. What are these category 2? And there are a lot of good things happening in category 2. I personally want to take a moment to explain that. अभी क्या होता था पहले म्यूचुअल फंड में, यूज्ड टू गेट benefit of indexation in the fixed income, right? So that instrument was very attractive. Now that has gone away. So now it is at par with any other instrument. Now in category 2 particularly, there are a lot of asset management companies who have designed a funds called private credit fund. Now what is private credit fund? The minimum threshold is again 1 crore. And this private equity credit fund, essentially, what do they do is to lend money to those businesses which are growing very fast in India, and they need cash, they need funds, and they do complete due diligence of the company. They lend the money, fix the coupon rate. It could be ranging from 10% to 13% to 16%. There are different buckets. There are companies which come under 13% bucket. There are AIFs which comes under 16%, and some of them have gone to as high as 18% also. Let me tell you, where they are offering 18% indicative yields from the fund. Of course, I would suggest all of you, because all of you are qualified, to do your own due diligence. So I'm not recommending anyone, but I'm telling you that this is where the industry has gone. This is where even the large players like Access Mutual Fund had come out with private credit fund. Even the large fund house like UTI Mutual Fund has their own credit fund, which is offering indicative yields in the tune of 13-14%. Then there are investors who said that, look, I don't want to participate in real estate anymore. Because I bought an apartment 10 years back, but it did not give me any yield, basically, and I end up paying more interest. So gone are those days. So there are two ways. Either you can buy an apartment directly and take a direct inventory,
or you take a route of funding these developers through AIF category 2, which is called real estate fund or infrastructure fund, whatever you want to call it. And there also you'll be surprised to notice that the yields are in the tune of 16% to 20%, depending upon what kind of structure that I'm talking. And these I'm talking about fixed coupon rate, which is interest, ब्याज जिसे बोलते हैं, ब्याज आपको 16% के करीब में मिल जाता है. And if it is a mezzanine fund, then it creates additional yield of about 3-4%, depending upon what the structure is. And there are good players around which has almost 10 years of track record. इसमें क्या होता है, investor trust नहीं करता है इस तरह के fund. So now you can go with a lot of confidence because there are fund houses. Even the previous company in which I worked earlier has now almost a decade of track record of generating close to 18-19% kind of IRR at the fund level. And then you have category 3. Now category 3 में दो category है broadly. One is long only, which is like a mutual fund. The only difference between AIF and mutual fund there is, and I keep getting this question from a lot of investors, that what is the difference between AIF and mutual? देखिए AIF और mutual fund में बहुत ज़्यादा difference नहीं है. Both the investments are done at the fund level. Okay. In mutual fund you get daily NAV. In AIF you get monthly NAV. In mutual fund you get monthly portfolio disclosure. In AIF you get quarterly disclosure at the fund level. And you have an expense around 2 to 2.5% regular. I'm talking about in mutual fund. Here also you have an expense around which is ranging from 2% to 2.5%. But इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा सा I would say that AIF category 3 is a deadly combination of mutual fund and PMS. And I'll tell you why. In mutual funds, you see you have minimum 50, 60, 70 companies because they're well diversified. It's supposed to be well diversified. But in AIF, it works like a mutual fund in terms of structure because it is at the pool level, you get units, but it behaves like PMS. So there, the fund manager creates a concentrated portfolio, buys 10%, around 10% stake, and maybe he can have 10 companies and build a portfolio around. Mutual fund में आप देखेंगे कि 10 company का portfolio generally रहता नहीं. मतलब that kind of flexibility is given to AIF manager. So these are broadly 2 or 3 differences technically, but other than that, there are no much difference honestly. Underlying is equity. And the other one is long short. Now, what is long short? Now, long short fund is basically there are investors like in mutual fund, they go for hybrid fund. भाई मैं इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे आप हाइब्रिड फंड दे दीजिए और आई एम ओके विद डबल डिजिट बिकॉज आई डोंट लाइक दिस रोलर कोस्टर राइड. आई डोंट वांट टू मच ऑफ volatility in the fund. So those investors are there in ultra HNI categories also. देखिए ह्यूमन का जो बिहेवियर है मोटा मोटी वो सेम होता है. किसी के पास पैसे कम होते, किसी के पास ज्यादा होते हैं, but the basic doesn't change. So there are ultra HNI clients whose behavior is that they don't want to take that kind of risk. They want half the volatility and double digit return. तो उनके लिए लॉन्ग शॉर्ट फंड्स बना है जिसमें क्या होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर 70% लॉन्ग रखता है, जैसा इधर हाइब्रिड फंड में इक्विटी रखा है 70%, और 30% उसको हेज करता है. वहां पे 30% डेट में डालता है फंड मैनेजर, या 35%. यहाँ पे 35% या 30% ही और 40% डिपेंडिंग अपॉन द फंड कॉम्बिनेशन, ही वुड create a hedge position through options, and that is allowed by the way in AI, which is not allowed in mutual fund so far, that you can hedge your portfolio against the volatility and it will deliver about 10, 11, 12% kind of return, although it has delivered more, but let's be realistic in numbers that it can offer you double digit returns. So sorry, ये जो हाइब्रिड कैटेगरी का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है. तो ये हो गया AIF की बात. व्हाट इज AIF बेसिकली. एंड अगर आप देखते व्हाट इज PMS इज नथिंग बट प्रोफेशनल सर्विसेज व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर्स. एंड इसमें क्या होता है, यू कैन कस्टमाइज द पोर्टफोलियो, यू कैन मेक टेलर मेड पोर्टफोलियो, और अदरवाइज यू कैन गो फॉर मॉडल पोर्टफोलियो. इसमें भी काफी कंपनीज हैं जो 15-15, 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रही है. अब इसमें कुछ IFAs भाई लोगों का या IFAs फ्रेंड्स लोगों का ये परसेप्शन है कि PMS महंगा है और बाकी सस्ता है. तो मैं बताता हूँ इसमें 2-3 चीजें हुई है. देखिए मेरा जो तजुर्बा है इसमें, पहली चीज ये हुई है कि ऑफ लेट वी आर विटनेसिंग हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो मैनेजर्स क्विटिंग देयर जॉब एंड स्टार्टिंग देयर ओन PMS कंपनी. द बेस्ट एग्जांपल इज Vikas, Mr. Sunil Singhania. The other example is Mr. Prashant Jain.
he quit the job and started this company. So they are all experienced. So these good quality managers are coming and they are really performing well. सेकेंड थिंग इज इसमें देखने को मिला है कि काफी कॉस्ट को लेके भी अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट हुआ है कि भाई आपके पास तीनों ऑप्शन है. सम पीपल पेंट द वॉल विद द सेम ब्रश सेइंग दैट सब में प्रॉफिट शेयरिंग है साहब, ये बहुत महंगा है एंड ऑल दैट. नो, you have the option. There are PMSs which are offering at 1.5% also fixed fee, no profit sharing. There are PMSs which are offering at 2% fixed fee, no profit sharing. And there are PMSs which are offering pure variable also. That look, I will make money up to 8%. There's a hurdle rate, and if I deliver returns more than 8%, then I will take 20% of that. और उसमें से हम आपको शेयरिंग देंगे. तो ये अलग अलग मॉडल है, बट ये परसेप्शन नहीं है कि ये खराब है, ये अच्छा है. Each of these category has its own clients. Now, for example, आपके for डीमैट में अगर आपके पास में suppose you have a stocks worth ₹1 crore as an investor and you are not able to manage it professionally, don't you think it would be a good idea that you give it to a portfolio manager instead of selling it and let the portfolio manager to manage it on the way he wants to manage, professionally, and deliver the risk adjusted returns in your portfolio? So these are different thoughts. I'm not saying you're right or wrong or he's right or wrong, but I'm saying that these are thoughts, and this is how the industry is shaping up. So in PMS we talked about there are PMSs like discretionary, non-discretionary. Advisory to almost band ho hi gaya, and discretionary, non-discretionary mein basically non-discretionary is for large family offices, where they work closely with fund manager. But mota moti, if you look at it, makes sense to be in the discretionary portfolio, where it is a discretion of the portfolio manager to decide which share to buy, when to buy, how much to buy, and how much to sell. All that discretion is given to the portfolio manager. Then the history, basically, we talked about. I already talked about history of AIF, so I'm skipping this slide. PMS is also. I didn't talk about the history, but a lot of people sitting here may not know and would be surprised to notice that PMS got into existence in India since 1993, and mutual fund got regulated in 1996. But I would say that yes, PMSs have come a long way in the sense that initially there were a lot of conflict of interest, and there was no ownership by those managers earlier. They were running in. There a lot of things happened, but thanks to regulator now they're bringing every vehicle on the same page. They're giving flexibility wherever it is possible. But in terms of the way it is managed, the way it is ring-fenced through various depository schemes, you have a custodian who is compulsory to be appointed by SEBI. Now SEBI has given the clear instruction to all the PMS managers to appoint a custodian. All that happening in the interest of the investor. So as a result of that, the industry is growing. We already talked about another development happened is like the way you have MFI. Similarly, you have now one second. So similarly, you have now APME. So this APME is basically recently a regulator said that you should have a lobby for AI PMS also. So therefore, this APME registration have been started in India now. तो देखिए इसमें थोड़ा सा नजरिया अगर अपना चेंज करते हैं तो देयर आर सम फैक्ट एंड फिगर्स व्हिच आई वांट टू टेक यू थ्रू वेरी क्विकली. देखिए क्या हो रहा है कि globally when you look at the equity market, that today it is more than $100 trillion, which is the market, out of which India is about 3.5 right now. But the share of alternate investment asset class is become close to $12 trillion globally, which is very large and it's growing very fast. So it's not only in India, it is global phenomena that alternate investments and portfolio management services, those schemes are shaping up very well. And globally, there has been a rapid increase in the net assets of AIFs, and it is projected that is going to be $20 trillion by 2030. So you see the kind of opportunities which are there. And at our platform, we have both Indian as well as international global portfolio managers, जिसकी हम study करते हैं. So Indian markets, this is just started. I mean, we are at only $62 billion, which is not even comparable. I'm talking about both put together, so long way to go.
And hedge funds globally have really exploded very well, in the sense that they're shaping a big time. I mean, you talk about, there are many fund managers, they run only India of hedge fund with a minimum of $5 billion to $10 billion of the basic asset class they start with. And sorry, my throat is not supporting today. So the kind of money which is coming in private equity through AIF is very huge. I mean, I'm sure all of you are seeing these number of unicorns, which 10 years back used to be zero or a one. Today they are more than 100. I'm sure you would have heard about like Paytm, PhonePe, etc. But none of you would have come across any investors who says that, look, मैंने ओला में 100 times पैसा बनाया, मैंने पेटीएम में 10 times पैसा बनाया है, मैंने फोन पे में 20 times पैसा बनाया. No, because the reason is these unicorns were funded by foreigners. They were not funded by Indians. So they made money. They made money 100 times, 200 times. In India, there are very few investors, who are smart investors. And I know some of them personally have really made 200 times, 250 times in Ola company. आप लोग Ola use करते हैं, Ola taxi. Ola में they have made 200, 250 times. So that's the kind of money which is coming from outside of India. And this is likely to grow big, very sure. And as I said, the category two has also exploded, because category two has different structures. You have private credit, you have infrastructure fund, which is real estate fund. Then you have private equity. In private equity alone, you have more than 3 lakh crores of investments in category two when you look at it. So as I said, the industry is growing. The PMS industry now has reached to 2.96 lakh crores, almost 3 lakh crores. अब देखिए, this is also growing very fast. We already talked about the global trend, and we are seeing globally an exponential growth of the index fund, because some of the active mutual funds are finding it difficult to generate alpha. We keep debating about it all the time. But what is happening is, there are some AIFs and PMSs managers, and they are sort of beating the benchmark significantly. And when I look at and take a glance, we have done the due diligence of more than 100 portfolio managers in India. And I'm glad to share that some of them are really beating the benchmark significantly. And there are total industry side we already talked about. It took us very few time. But another important thing we talk about the saving rates growing in India. But this saving rates which are growing in India is not coming to mutual fund alone. It is also going to AIF and PMSs. And that's why this growth I can see. I have picked up one example. Now, what is this example? This is a category 3 AIF. अभी मैं आपको बता रहा था 2012 में इट गॉट रेगुलेटेड. तभी एयूएम था मुश्किल से 1000 करोड़. आज देखिए, our industry has now reached to 80, close to 80 lakh crores, only category 3. Category 3 आपको मैंने बताया क्या है? It's like a mutual fund. Okay. This category 3 alone has reached to 80 lakh crores. That's the kind of growth it is happening. Then I talked about mutual fund, PMS industry growth. So mutual fund तो सही है, but look at the PMS industry. The industry is growing at 25% CAGR year on year, as in for more than now almost 9 years. This is the 10th year it is growing at 25% year on year. तो पहले म्यूचुअल पीएमएस इंडस्ट्री 2012-13 में आप देखते हैं तो टोटल 30-35,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, जिसमें सम ऑफ द मेजर प्लेयर्स वर लाइक एएसके, मोतीलाल ओसवाल और 2-3 लोग. अभी आप देखिए, you see small boutique manager like Sunil Singhania ji, who left the job in 2017 at Nippon, started in 2018. Today they are managing $2 billion, which is 16,000 crores. I mean, no time. What was the time? Only 5 years. In 5 years, they're managing a large sum of 16,000 crores. So this is how industry is growing. So my suggestion would be all of you to start looking at this space very, very carefully. And there are few things that you should be noting down. First of all, this business requires a lot of deep understanding.
ये ऊपर ऊपर करके नहीं हो इसमें, बिकॉज यू हैव टू हैव कैपेबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो. You need to have a capability of understanding the portfolio manager, because some portfolio manager, they say something else and they do something else, and you know, all of you know what I am referring to. So you have to have very strong understanding of the domain knowledge. Have to have a very excellent investment advisory team working for you, because इसमें क्या बड़ा पैसा होता है, 50 लाख 1 करोड़ रुपए होता है. तो यू नो क्लाइंट का फोकस, ध्यान भी वही होता है. क्लाइंट ऑब्वियसली होना भी चाहिए, बिकॉज इट्स large sum, so client might be focusing on that. So therefore it is very important that you have to have a sort of review process in place where you review the portfolio every year at least twice. Strong filtering process. There are a lot of no's than yes, so you have to be very careful about it. As I said, you need to have a capability and there are opportunities. But what is more important before you onboard any client is that you tell them that when you don't have 200% conviction on these products, don't commit yourself. Not 100%, 200%. because इसमें मेरा एक्सपीरियंस रहा है 20 साल का. आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. मेरा 20 साल का तजुर्बा रहा है कि इन्वेस्टर रिटर्न देख के इसमें आ जाते हैं, बट जब मार्केट्स अपने साइकिल से खराब चल रहा होता है, उस टाइम पे उनका क्या थॉट होता है कि भाई मेरा फीस भी जा रहा है, पोर्टफोलियो भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इवेंचुअली वो 1-1.5 साल में निकल जाता है. बट ये वैसा गेम नहीं है. ये गेम है लॉन्ग टर्म का, 5 साल 7 साल का. यू हैव टू हैव लॉन्ग टर्म होराइजन एंड यू हैव टू हैव 200% कन्विक्शन ऑन द मैनेजर टू whom you have given. ये ऐसा ओवरनाइट चेंज नहीं होगा. पीपल गो थ्रू देयर ओन साइकिल, एंड इफ यू डोंट हैव, इफ यू हैव 199% of conviction, then you are not eligible. As an investor, you are not eligible. Don't even stand here. You're not eligible to invest. Please don't. You commit your money somewhere else. When you are coming on AI PMS and when you are investing in these high conviction portfolios, you have to have your own high conviction on the product and the manager first. और आपके ऊपर भी उनको पूरा भरोसा होना चाहिए. अगर वो नहीं है तो ये गेम ज्यादा दिन नहीं चल सकता, सस्टेनेबल नहीं. This is just my investment philosophy. So our company, as I said, we're a professional driven organization. We bring all sort of expertise on the table when it comes to investing in alternate investments and portfolio management services. हम लोग की टोटल टीम है 14 लोगों की है. हम लोग, we are a research driven organization, so full time job is to do complete research and due diligence on portfolio management services. So the first thing that we look at is this is an internal framework, proprietary based framework, because me and my elder brother have been investing in PMSs for over a decade now, and we made a lot of mistakes. Let me accept that. At least 2 major mistakes. At one point of time, I felt that only the growth style works better. Then I realized that no, value style also matters. And then I realized that you have to have both the styles in your portfolio, value as well as growth, because there are times when value does well, there are times when growth does well. So what we important is we look at the style of the portfolio manager very carefully. And what is more important here is we look at whether the portfolio manager sticking to the style what was stated earlier, or going all around and saying something else. So that needs to be examined very carefully in the light of cool period. The other thing is quality of the portfolio. That's very essential, because ये रिटर्न बनाने के चक्कर में कुछ मैनेजर्स, पीएमएस मैनेजर आपने सुना होगा जिसमें 1 crore has become 20 lakhs also. And all of you know what I am referring to. You have to be very careful in terms of looking at the quality of the portfolio. And third, which is more important, is we like consistency, in the sense that we like managers who are like maybe in Q2 in terms of quartile ranking, but maintaining that Q2 ranking. It's not that आज Q1 में कल Q4 में वापस Q1 में. We don't like this roller coaster, which means that he's not running high conviction ideas. You know. So these are the framework in which we evaluate the portfolio manager. With that, I'd like to conclude my presentation, and I would be happy if you have any questions for me. I'm happy to answer. Over to you, Varun ji. थैंक यू सो मच विकास जी, आपने इनपुट दिए. अच्छा, मेरे सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि पीएमएस के लिए 21B एग्जाम क्लियर करना होता है, तो आप उसके लिए कुछ टिप्स दें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम क्लियर नहीं करा है. मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, तो कुछ टिप्स आप उसके बारे में दें प्लीज. देखिए 21A कंपलसरी हो गया. अभी मैंने आपको बताया कि एमपी के जैसे एपमी का एक बोर्ड बन गया है.
और वो कंपलसरी उन्हें किया, तो हम वी हैव रजिस्टर्ड आवरसेल्फ विद एपमी आल्सो। इसमें टिप यही है कि आप इसमें जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ में संपर्क में आए, ट्रेनिंग ले प्रोफेशनली, और एग्जाम क्लियर करें। मतलब इसमें माइनस मार्किंग है, आई नो, तो इसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अनलेस यू कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर, डोंट आंसर दोस क्वेश्चन। दीज आर वन और टू टेक्निक्स दैट आई कैन शेयर इट विथ यू। बट इसमें स्टडी करना पड़ेगा, इसमें शॉर्टकट नहीं है कुछ, कहने का मतलब इसमें पूरा बुक पढ़ना ही पड़ेगा आपको, तभी आप पास हो पाए। देयर नो शॉर्टकट्स। राइट सर, आपसे ये एक्सपेक्टेड था जवाब। अच्छा, दूसरा सर, क्या पीएमएस आपने बड़ा अच्छा पंचलाइन दिया था कि आर्ट और साइंस। सो आप किस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं, ये एक बार जरा आप समझाएं कि पीएमएस, चलो 21A पास कर लेते हैं, आप रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद इसको किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है, बिजनेस को किस तरह से नए कस्टमर्स को एक्वायर करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इस पे भी आप जरा कुछ बताएं प्लीज। देखिए, मैं किसी को कन्विंस नहीं करता हूँ इसके लिए। इसका जैसा मैंने बोला कि अलग अलग ऑडियंस है, मर्सिडीज का भी ऑडियंस है, ऑल्टो का भी ऑडियंस है, और होंडा सिटी का भी ऑडियंस है ना, अगर आप कार खरीदने जाते हो तो इसके अलग इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर, HNI इन्वेस्टर्स। तो वी शेयर द आइडियाज विद देम, दैट वी टेल देम स्टेट सिंपल थिंग, दैट आपका, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेके आप ज्यादा कंसर्न मत हो। आप डोंट बी टू मच, डोंट वरी अबाउट द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। यू शुड बी लुकिंग एट कि पैसा किसको दे रहे हैं, अल्टीमेटली हु इज द फंड मैनेजर। तो बोलते हैं ना कि bet on the jockey, not on the horse. So you ultimately, if this particular manager is a deserving manager, and this gentleman is not into mutual funds and deserves your allocation as your hard-earned money, then you give money through PMS, या फिर आप AIF में करो, अगर म्यूचुअल फंड में नहीं है तो। और म्यूचुअल फंड में तो आप म्यूचुअल फंड करो, उसका हो सकता है PMS ना करो। तो इन्वेस्टर की लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है इसमें, बट हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हम उन्हें बोलते हैं कि आप सारे एसेट क्लास को आप इन्वेस्ट करो। सर, अगर इन्वेस्टर डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में से चूज करना चाहे, और वो कहे कि भाई मैं नॉन डिस्क्रिशनरी में जाना चाहता हूँ, मैं एडवाइस करूंगा, या मैं उसमें मैं इंफॉर्मेशन रखता हूँ, तो फिर उसको कैसे कन्विंस किया जाए, या फिर उसको कैसे समझाया जाए कि फंड मैनेजर ज्यादा पोटेंशियल है, उसको उसको ज्यादा समझ है, क्या करना चाहिए, उसको कन्विंस करना चाहिए या फिर कन्विंस नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे नॉन डिस्क्रिशनरी में जाना है तो उसमें जाने देना चाहिए। देखिए, एक बार तो बताना चाहिए, मैं आपकी बात मानता हूँ, इट इज अवर मोरल ड्यूटी कि हम उसे एक डिफरेंस बताएं, डिस्क्रिशनरी और नॉन डिस्क्रिशनरी में प्रोफेशनली मैनेज होता है। वो कंपनीज के कॉल अटेंड करते हैं, कंपनीज का रिसर्च करते हैं, उनके पास में जाते हैं, मिलते हैं, उसके कंपनी के डेटा क्रेडिटर से बात करते हैं। तो ये PMS में ना ये सब फर्स्ट हैंड रिसर्च होता है, अनलाइक म्यूचुअल फंड वेयर यू हैव टू मेनी ब्रोकर्स एंड यू वर्किंग क्लोजली विद देम। यहाँ पे यू हैव टू डू योर ओन रिसर्च। इट्स जनरली अ स्मॉल बुटीक हाउस, mostly the PMS managers who are running the business in India now, and this is increasing, by the way, there are now more than 300 schemes in PMS alone. तो बताना तो चाहिए, इट इज आवर ड्यूटी एज एन एज अ वेल विशर ऑफ योर क्लाइंट। बट बाकी किसी इन्वेस्टर का तजुर्बा अगर ज्यादा है और अगर वो अपना यूटिलाइज करना चाहता है विथ हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, तो आप उसे नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड देर आर सम गुड क्वालिटी नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हु आर हैप्पी टू वर्क अलॉन्ग। उसमें क्या होता है कि दे गिव देयर एडवाइस दैट दिस इज द कंपनी वी हैव रिसर्च and we feel that this will grow in future. It is on clients to decide finally and take a final call whether he also have a similar view or not. अगर वो नहीं है तो वो स्किप होके दूसरा प्रपोजल चला जाता है। तो देर आर सम अवेयर इन्वेस्टर्स एंड दे लाइक टू यूज देयर ब्रेन एंड यूटिलाइज देयर ओन स्ट्रेंथ, व्हाई नॉट ऑफर नॉन डिस्क्रिशनरी आल्सो। सर, जैसा कि पीएमएस के अंदर कोई भी एग्जिट, मतलब कोई भी लॉक इन नहीं है, एग्जिट लोड होता है, कोई लॉक इन नहीं होता, तो कोई स्टोरी आप अपने किसी इन्वेस्टर की बताना चाहें जो ड्यूरिंग द हाई वॉलेटिलिटी टाइम थोड़ा
डिस्टर्ब हुआ हो, डिसबैलेंस हुआ हो, फिर उसका आपने हैंड होल्डिंग करी हो? काफी है सर, अभी तो सब आप सब भी करते ही है, म्यूचुअल फंड्स में करते ही, वीएमएस में करते ही, वही सेम स्टोरी है सर, कुछ ऐसा अलग नहीं है। इन्वेस्टर्स को हैंड होल्ड करते रहना पड़ता है लगातार, उनको बात करके, और संयम बनाए रखना पड़ता है। तो कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है, बट एक स्टोरी है, एक पीएमएस का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसमें या प्लीज। 2017 में इन्वेस्ट किया, तभी आपको पता है स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई। और 2018 में आपको पता है कि नोटबंदी वगैरह हुई, जीएसटी हुआ, फिर मार्केट आईसीयू में चला गया। 2019 में फिर से भी कैटेगराइजेशन हो गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, स्मॉल कैप सो बीटन डाउन, तो 50 lakhs बिकेम 27 lakhs। तो इन्वेस्टर्स बोला कि अभी 27 ही लेके चलते हैं, अभी तो कुछ बचेगा नहीं लगता है यहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया और उसको कन्विक्शन दिया, उसके पोर्टफोलियो को रन किया, उसकी कंपनीज जो पोर्टफोलियो की बताई कि देखिए कितनी हाई क्वालिटी कंपनीज हैं, इनकी अर्निंग्स ग्रो हो रही है, बट पोर्टफोलियो के प्राइसेस ग्रो नहीं कर रहे। तो दिस हैज बिकम अ स्प्रिंग। जब ये स्प्रिंग जितना पीछे जाता है उतना तेजी से आगे जाता है, आप इसे समय दें। एंड क्लाइंट उसमें दो थे, एक रिडीम कर गया और एक रह गया। तो जब रह गए उसमें, उनका पोर्टफोलियो भी मेरे ख्याल से 2 crores and 71 lakhs है। या सो 2017 इन्वेस्टेड, 23 6 years में, स्मॉल कैप। बिल्कुल विकास जी, देखिए जैसे अब म्यूचुअल फंड सही है, धोनी से लेके सचिन तेंदुलकर तक सबने कह दिया। अभी एआईएफ और पीएमएस के बारे में इतनी इंफॉर्मेशंस इन्वेस्टर्स के बीच में नहीं है। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचता है, उसे समझाता है, वो कन्विंस हो जाता है, वो इन्वेस्ट कर देता है। म्यूचुअल फंड में क्या इशू है ना, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे आसपास के लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आती है तो एसआईपी सपोर्ट करती है और उसकी एक कन्विक्शन है। पीएमएस में सिवाय उस डिस्ट्रीब्यूटर के जो उसको समझा सकता है, या उस फंड मैनेजर को देखने के जो फंड मैनेजर उसका फंड मैनेज कर रहा है, उसके पास और सपोर्ट्स नहीं होते। तो इतनी कन्विक्शन के लिए उससे कितनी बार कांटेक्ट किया जाना चाहिए, कितना उसकी हैंड होल्डिंग की जरूरत, कितने कितने समय में उसको रिव्यू देना चाहिए, ये सब चीजें किस किस फ्रीक्वेंसी में आप लोग करते हैं? क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आप क्या, आपने क्या देखा कि इन्वेस्टर्स को कितनी फ्रीक्वेंसी में आपकी हैंड होल्डिंग की बार बार जरूरत पड़ती है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर आस्किंग। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये व्हीकल अलग है, बट है तो अंडरलाइंग इक्विटी। तो आप लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ऑल ऑफ यू आर वेल एक्सपीरियंस। तो जैसे आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को रिव्यू करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी में, जो साइज में उसका इन्वेस्टमेंट है, कि एसआईपी है तो आप साल में एक बार बात करते हैं, एसआईपी तो चल ही रहा है, फिर कभी जरूरत हुई तो बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लार्ज सम होता है 50 lakhs का, तो इन्वेस्टर का ध्यान थोड़ा इसमें ज्यादा होता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको हैंड होल्डिंग म्यूचुअल फंड से ज्यादा करनी पड़ती है। इसका कोई फ्रीक्वेंसी कोई डिफाइंड नहीं है, कोई इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है, तो आप कितनी फ्रीक्वेंटली में आप उससे बात करते हैं, बिकॉज इक्विटी साइकिल तो सेम ही है। तो बट मेरा ये सबमिशन है कि कम से कम आप उनका एक बार रिव्यू करें, एक बार पोर्टफोलियो देखें, बात करें, और उनको हैंड होल्ड करें। तो अच्छा समय खराब समय दोनों आता है, बट लार्ज सम होता है तो उसका ध्यान यही होता है। तो वो आप भूले ना, और उसको आप थोड़ा सा अगर अच्छे से हैंड होल्ड करें, तो इसमें भी लंबी जर्नी बन सकती है। सर इस समय अच्छा समय चल रहा है डेफिनेटली। और स्मॉल कैप जैसे कि 2017 आपने बोला था, तो इस समय आप अपने इन्वेस्टर्स को, हालांकि अंदर की बात है, आप अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह का पीएमएस एडवाइस कर रहे हैं, स्मॉल कैप ओरिएंटेड या फिर कुछ भी जो आप कर रहे हैं? देखिए ये मैं एडवाइस ऐसा नहीं है इसमें, मैं क्या रिस्क एपेटाइट चेक करता हूँ इन्वेस्टर का। तो हमारे पास में कुछ क्वेश्चन आए ऐसे, आई एम श्योर आप लोग भी करते हैं ये काम, उसमें रिस्क एपेटाइट चेक कर लेते हैं। अभी कोई, इसमें क्या होता है, आईपीएम में से बहुत एक्सीडेंट होता है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज इंडस्ट्री, मेरा जो पर्सनल तजुर्बा रहा है कि इसमें इन्वेस्टर ज्यादा लंबा रुकता नहीं, और वो सोचता है कि मैं 50 लाख डाल रहा हूँ, 1 करोड़ हो जाए मैं लेके चला जाऊंगा। ऐसे होता नहीं है ना, आपको ही पता है, इट्स नॉट दैट इजी। सो इसमें क्या होता है, बहुत एक्सीडेंट होता है, तो इसमें बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है, बहुत उसका एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, पूरा उसका प्रोफाइल चेक करते हैं, देन वी डू अ सीरीज ऑफ मीटिंग। उसमें खुल के पूछते हैं कि अगर आपका 1 करोड़ 50 लाख हो गया तो आप क्या करेंगे, 70 लाख हुआ तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे या निकल जाएंगे।
आंसर आता निकल जाएंगे तो फिर स्मॉल कैप उनको नहीं देते, सिंपल। पर अगर वो बोलता है कि भाई मैं रुकूंगा और टॉपअप करूंगा, तो ना ये कलेजे वाला आदमी है, सो फिर उसको हम स्मॉल कैप देते दबा के। बिकॉज सी हर हर इसका एक आप अच्छा वैल्यूएशन ज्यादा है, ठीक है, 2017 में भी तो वैल्यूएशन ज्यादा था, है ना, क्योंकि 2017 वालों ने अभी पैसा नहीं बताया, मैंने अभी आपको बताया कि 2,71,00,000 रुपीज हो गया है पोर्टफोलियो विद इन 7 ईयर्स। 2017 जैन में डाला था उन्होंने, 7 8 साल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बनेगा, व्हेन आई लुक एट इट इज डिलीवर्ड अबाउट 24% कैकर। आपके म्यूचुअल फंड में निपॉन स्मॉल कैप में पैसा नहीं बना, बना ना, आप देखिए 10 साल में 10 गुना हो गया वहां भी। तो बनता है पैसा, बट वही है कि आपको रिस्क एपेटाइट चेक करना चाहिए इन्वेस्टर का, और फिर आपको। बिल्कुल ठीक है विकास जी। और कोई अगर कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। इतने सर सवाल आ रहे हैं। एक सवाल मैं और पूछ लेता हूँ। पीएमएस में लेकर के चार्जेस को बड़ा कई बार डिबेट होता है इन्वेस्टर्स के बीच में, तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं ये भी बताइए अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। देखिए, जैसे म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेगुलर होता है ना, ठीक इसी तरह से अभी पीएमएस में भी इंट्रोड्यूस हो गया डायरेक्ट और रेगुलर। तो अगर कोई 2.5% का फीस है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट का फीस 1.5 हो और रेगुलर का फीस 2.5 हो। तो ये तो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप एडवाइजर्स के साथ जाएंगे तो आपको तो फीस देना पड़ेगा। बट इन्वेस्टर हैव आल्सो अंडरस्टूड एंड रियलाइज दैट विदाउट एडवाइजर्स इफ दे गो एंड इन्वेस्ट, और क्योंकि इसमें बड़ा सम होता है, अभी सपोज यू इन्वेस्टेड 50 लाख रुपीज, आप कोई पीएमएस अगर चला नहीं ठीक से, तो आपको कब पता चलता है? 3 साल 4 साल में, ऑन द हाइंडसाइड यू रियलाइज दैट व्हाट मिस्टेक यू मेड। आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डोंट यू थिंक यू हैव टू हैव एडवाइजर्स जिनका तजुर्बा है, अपना इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अरे मैं बोलता म्यूचुअल फंड का भी एक्सपीरियंस है, तो मोटा मोटी तो गेम सेम ही है ना। फर्क इतना है कि व्हीकल चेंज हुआ है, बट all our IFA friends, they understand markets very well. They have been there in the industry for over 2 decades now. Most of them. Some of them have recently entered, also have an experience. So they're all respected. Their full-time job is to do complete research on markets. So my submission to all those investors is कि आप ये ऑन द हाइंडसाइड मिस्टेक देके और फिर बदलना चाहेंगे या पहले ही एडवाइजर ले लेंगे, तो आपका वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज योर इंटरेस्ट इज अलाइन विथ योर IFA's इंटरेस्ट, योर एडवाइजर्स इंटरेस्ट, तो फिर पक्का श्योर शॉर्ट पैसा बनेगा। बिकॉज आप तो एज एन IFA उसको रेगुलर इंटरवल पे आप तो इंटरनल उसका तो ट्रैक रखेंगे ही ना। तो आपको समझ में आ गया कि आगे ना, हाउ डू विजुअलाइज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। Now there are various ways that in which you can evaluate the portfolio and see whether the portfolio is going to do well or not. One of the parameters, the way what we do is we look at the earnings of the portfolio. That clearly indicates that the portfolio will make money or not. Second, we look at the valuations of the portfolio. We look at the P's of the portfolio, whether it is in line with markets, higher than the markets, or lower than the market. If it is a banking portfolio, we look at the price to book value. So there are ways in which we evaluate. और हमको लगता है भाई इसमें पैसा नहीं बनेगा, तो हम अपना रिकॉर्ड बोल देते हैं भाई इसमें से आप निकल जाओ और दूसरी स्कीम में आ जाओ। तो वो एडवाइजर ही बताएगा, पीएमएस मैनेजर आपको बोलेगा क्या है, लुक माय डियर इन्वेस्टर, आई एम अंडर परफॉर्मिंग, और तुम भाई अपना पैसा ले जाओ। डू यू थिंक दिस डे विल एवर कम इन इन्वेस्टर्स लाइफ when he will get a call from his portfolio manager and you ask this question to your investor and he would say that look, I am underperforming और ये पैसा ले जाओ? It will not happen and he will keep asking, borrowing time, एक 6 महीना दे दो, साल भर दे दो। तो ये 6 में तो 3 साल में पैसा नहीं बना, फिर 6 महीना साल भर उसको दिया, चौथे में भी नहीं बना, और 5वें साल में उसने रिडीम किया, 5 साल खराब कर दिया। इससे अच्छा आप एडवाइजर को ले लो ना अपने साथ। 5 साल खराब करना है कि एडवाइजर की एडवाइस लेनी है, ये आप डिसाइड कर लो। इसमें क्या ना, आप समझो ये माइंडसेट अलग है, ऐसा है, ये ये गरीब माइंडसेट नहीं है, मैं आपको खुल के बोलता हूँ, ये अमीर माइंडसेट है। इधर आपको इन्वेस्टर से पूछना है कि तुमको पैसा बचाना है, पैसा बनाना है, यू वांट टू सेव मनी और यू वांट टू मेक मनी, फर्स्ट बी क्लियर। इसीलिए मैं आपको बोला कि यू हैव टू हैव 200% कन्विक्शन, नहीं तो यहाँ पे आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप इन्वेस्टर को बोलो ले जाओ अपना पैसा वापस। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यू वांट टू सेव मनी और यू वांट टू मेक मनी। सेव मनी तो फिर आप खुद ही ये स्टॉक खरीद लो,
बहुत सारे ऑनलाइन ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, ब्यूटीफुली डिजाइंड है, आपको बहुत सस्ते में 20 रुपए में ट्रेड मिलता है, यू बाय एंड होल्ड इट इफ यू थिंक यू कैन मैनेज इट. बट इफ यू वांट टू create wealth, beat the benchmark significantly, in order to create long term wealth and have the power of compounding working for you, you have to have, first of all, right advisor whose interest is aligned with you, and then who will help you to choose right portfolio managers. And if there is any problem with the अच्छा उसके बाद भी गलती होगी, सपोज आपने भी एक पोर्टफोलियो मैनेजर, मैंने भी चुना, अभी वो तो हमने उसके बेसिस द पैरामीटर्स, बेसिस द मेरिट डिसाइड किया. अभी म्यूचुअल फंड में भी होता है ना, कोई फंड परफॉर्म नहीं करता तो आप बदलते हैं ना. म्यूचुअल फंड वाला थोड़ी फोन करके इन्वेस्टर को बोलता है कि लुक आई एम XYZ AMC एंड आई एम अंडर परफॉर्मिंग, यू टॉक टू योर एडवाइजर एंड टेक द मनी आउट, यू डू इट दिस वर्क. तो वहां भी होगा, वहां भी एक दो मिस्टेक गलत होंगी, मतलब एक दो मिस्टेक होएगी, एक दो कॉल गलत होगा, बट आप चेंज कर लेंगे उसको प्रोएक्टिवली. जो इन्वेस्टर लेवल पे चेंज होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप दिन इन डे आउट यू स्पीक टू पोर्टफोलियो मैनेजर्स, यू मीट देम एट वेरियस forums, you interact with them, you read their portfolio, you evaluate on various parameters that I talked about like P, earnings, and then basis that you advise your client. So मेरे हिसाब से ये ट्रेंड देखने को मिला है AIFs में अभी तक कि मोस्टली फंड्स जो है एडवाइजर के थ्रू ही रूट होते हैं. बहुत बढ़िया विकास जी, आपसे यही बात सुनने की उम्मीद थी. और कोई और अगर क्वेश्चन किसी लिसनर के मन में है तो वो पूछ सकते हैं. NRI कैन डू, ये एक प्रश्न आया है. बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एनआरआईज कैन डू इट, व्हाई नॉट. एनआरआई इनफैक्ट अभी देखिए, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की जो स्टोरी ग्लोबली प्रेजेंट की है, तो इसमें देखने को मिला है कि बहुत सारे हमारे एनआरआई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जिन्हें इंडिया की कैपिटल मार्केट्स में पार्टिसिपेट करके इंडिया स्टोरी का बेनिफिट लेना है. तो इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड गिफ्ट सिटी इन अहमदाबाद, आई एम श्योर यू वुड नो. अभी वहां पे बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर ने अपना ऑफिस ओपन कर लिया और वहां के थ्रू एक AIF लॉन्च किया उन्होंने, जिसमें पैसा डॉलर में आता है और इन्वेस्ट होता है इंडियन मार्केट्स, और इंडियन मार्केट्स का जो रिटर्न्स है वो बेनिफिट होता है और बाद में उसको फंड्स डॉलर में मिलता है. अभी कई इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको डॉलर से रुपी में नहीं लाना है ऐसा, और उनको मैं ब्लेम भी नहीं करता हूँ, कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज योर रुपी इज डेप्रिशिएटिंग बाई 3 to 4% ईयर ऑन ईयर अगेंस्ट डॉलर एंड फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड एंड टू. मुझे याद है 50 रुपए होता था डॉलर का वैल्यू एक समय पे, जो आज 84 रुपीज 83 रुपीज है. तो कई लोग, तो ऐसे भी एवेन्यूज खुल गए हैं, जो आप उसको एक्सप्लोर करिए. आप कभी गांधीनगर जाइए, वहाँ पे बात करिए, आप अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजर्स वहाँ पे ओपन अप किया उन्होंने ऑफिस. तो एनआरआईज का बहुत पैसा अभी इंडियन इक्विटीज में आना चालू हो गया है. थैंक यू सर. ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी ये सच में जबरदस्त थी, NRI वाली. और इसके डॉलर और रुपी प्राइस में जो इश्यू चल रहे हैं उसका फायदा उठाने के लिए जो हमें करना चाहिए वो समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को. तो और कोई अगर सवाल लिसनर्स में से है तो हम लोग ले सकते हैं. आई थिंक विकास जी आपने सब कुछ इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी आर्ट एंड साइंस वाली थ्योरी से कि सारे ही डाउट्स क्लियर हैं. फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो 1-on-1 आपसे पूछा जा सकता है. और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच. आप आए, आपने समय दिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ साझा करी, हमारा मनोबल बढ़ाया. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. देखिए, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और अपने जितने भी IFA फ्रेंड्स हैं उनसे मौका दिया कि मैं अपने थॉट शेयर कर सकूं. कनन जी तो हैं ही, मैंने आपको बोला, हीरो. तो वो तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, इस तरह का वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने सारे IFA फ्रेंड्स को. तो थैंक यू सो मच. दिस इज द लीस्ट आई कुड डू इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द सोसाइटी. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू विकास जी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू. या निशान जी, I think he was saying something. So can we conclude the call here? Yeah, sure. Thank you so Okay. much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.
ओके बाय।